Today we will learn about remainder theorem. I picked part 3. First of all, I will solve this. I will put it equal to 0 and we will get plus 1. Then I will let it equal to fx and put x value into this expression plus 1. आपको जहाँ जहाँ x दिखेगा एक्सप्रेशन में आप वहाँ वहाँ 1 पुट करोगे. x की पावर 4 एक इवन नंबर है. जब भी हमारे पास पावर में इवन नंबर आएगा हमारी पावर अंदर वाले माइनस को प्लस में कर देगी. अगर अंदर माइनस हुआ तो अब 1 की पावर जो 4 है वो हम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा. 1 की पावर 3 भी हमें 1 ही देगी, 1 की पावर स्क्वायर भी हमें 1 ही देगी और आगे भी हमारे पास 1 1 ही है. टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 1s. Now we will do next question, question 3. We will discuss about factor theorem. In factor theorem, we will take fifth part. इस क्वेश्चन में अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है, तो आप इसको प्रूव करवा सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर है. Now we will learn factor theorem. I took question number 3 part 5. We will take this value and let it equal to fx. Then we will take this one and put it equal to 0. We will get x is equal to 3. We will put x value in it. If we will get 0 in it. If we will get 0 as an answer of this expression, then it will prove this value is a factor of this expression. Otherwise it is not. 3 raised to power 4 will give us 81. 3 raised to power give us 27 and 27 will then multiply with 3 will give us 81. 3 raised to power 2 give us 9. We will cut 81 to minus 81. Then we will solve this and we get 3 as an answer. Now we can say that x minus 3 is not a factor of x raised to power 4 minus x raised to power 3 plus x raised to power 2 minus x plus 1. In short, if we got 0 as an answer, then it would be the factor of this expression. But now in our situation we got 7 as an answer, so this value is not the factor of this expression.